Dear students, today I am going to teach you the lesson Landscape of the Soul. Landscape of the Soul. This lesson has been written by Nethali Truverao. Nethali Truverao. She is Nethali Truverao. So first of all, we are going to know something about the writer. She is an art historian. Historian means the person who writes the history. हिस्टोरियन उसे कहते हैं जो इतिहास लिखता है. एंड शी इज आर्ट हिस्टोरियन. कला की हिस्ट्री को ये लिखती हैं. मीन्स शी इज द राइटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट. Who came in limelight means वो प्रकाश में आई. What does it mean? She became famous, popular, reputed. When? कब? Because of her translated work. City of Jinns. Here D is silent. Means when she translated the book City of Jinns, she became famous. She came in limelight. And this book, City of Jinns, a book by William Dalrymple. William Dalrymple is the writer of this book, which he translated. She is the wife of Belgium ambassador. Ambassador means राजदूत. बेल्जियम के राजदूत की वो पत्नी है. टू इंडिया, भारत के लिए जो बेल्जियम के राजदूत हैं उनकी वो पत्नी है. She has traveled various cities of the world with her husband. Clear? She holds a master degree in history of art. हिस्ट्री ऑफ आर्ट पर उन्होंने वो प्राप्त करती हैं क्या? मास्टर डिग्री, एमए. और किस पर? आर्कियोलॉजी पर, पुरातत्व पर और हिस्ट्री ऑफ आर्ट पर वो मास्टर डिग्री प्राप्त करते हैं. फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के विश्वविद्यालय से. एंड आफ्टर दैट शी planned, here it is mistake,
उन्होंने योजना बनाई टू राइट हर नेक्स्ट बुक ऑन ओल्ड दिल्ली आर्किटेक्चर लाइक जामा मस्जिद एंड चांदनी चौक. Means she decided to write a book on the architecture of old Delhi, especially the architecture of Jama Masjid and Chandni Chowk. It is sure India has a mysterious effect on those visitors who came in India or all those foreigners having come to India lived here. So she was also impressed with Indian culture and civilization, because her husband was ambassador of Belgium and living in India. Now we are going to know the introduction of the lesson. This chapter comprises what of two parts. ये जो चैप्टर है मीन्स दिस लेसन comprises means includes two parts, दो पार्ट्स को इंक्लूड करता है. And Nethali Truvrao is the author, as I told you. Nethali Truvrao is the author of this lesson. The author has taken the first part from the landscape of the soul. Do you know the meaning of landscape? Landscape means a picture of land that represents a view of natural scenery. धरातली तस्वीर को कहते हैं. तो what is the soul of landscape? As well as the first part represents the ethics and spirituality in Chinese painting. Chinese painting की जो spirituality है, that is the great characteristic of Chinese art, and ethics, morality जो है उसको बताती है. जो पहला पार्ट है उसको बताता है. Where is the second part has been derived from getting inside, outside art. सेकंड पार्ट जो डेराइव करता है अर्थात निकाला जाता है इस पाठ में, from getting inside and outside art. There are two kinds of the art.
inside art and outside art. We must understand this thing. Inside art is painted with brush and colors on canvas, and outside art that does not requirement of brush, colors and canvas. It is made with the sands, with the sands on the surface, with stones on the surface, with the mud on the surface. The second part has been derived, निकाला जाता है, और the second part of this lesson tells us about the inside art and outside art. Getting inside and outside art. Getting inside is an article. ये गेटिंग इनसाइड एक आर्टिकल है जो छपा था, विच वॉज प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड, दैट वॉज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स. और when was it published? In 2005. 2005 में ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था. What was the name of the article? Getting Inside. Means that articles tells all about the inside arts. It is written by Brinda Suri. ये बृंदा सूरी के द्वारा लिखा जाता है या लिखा गया है. The main theme of the chapter is about arts. The main theme of this lesson is about the arts. None can define art. Although art is found in many ways in every human being. अनेक तरीकों से कला प्रत्येक मानव जाति में है. किसी के अंदर किसी बात की कला है, किसी के अंदर किसी बात की कला है. तो उन कलाओं के बारे में इसमें चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आर्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का एक हिस्सा है. Although a Hindi poet tries his best to define art, but it is not a complete definition, perfect definition. मानवता सौंदर्य जीवन की कला का संतुलन हो. He says that the person who makes a balance in the ways of living, that is art. It is not the complete definition of art.
It revolves means the theme of this relation revolves round the art of painting. Revolves चारों तरफ घूमती है. जो थीम है इस लेसन की वो चारों तरफ घूमती है. और किसके? द आर्ट ऑफ पेंटिंग. पेंटिंग की आर्ट के चारों तरफ. दैट इज मेड विद ब्रश and colors on canvas or on the wall. दीवार पर भी पेंटिंग बनाई जाती है, कैनवस पर भी बनाई जाती है. ब्रश से, तूलिका से. Revolves around the art of painting, told through the help of various stories. And this thing means art of painting has been told in this story through or by the help of various story. अनेक कहानियों के द्वारा. Basically, 4 stories here. There 4 stories are told in this lesson about art. कला के बारे में 4 कहानियाँ बताई गई हैं और इन्हीं कहानियों के माध्यम से आर्ट के बारे में, कला के बारे में बताने का प्रयास किया गया है. The writer has tried his best to tell about the art or the mysteriousness of the art, the ethics of art, telling 4 stories. We learn about Chinese painters. In the beginning of the lesson, हम सबसे पहले किसके बारे में सीखते हैं या जानते हैं? We get chance to learn something or to know something about the Chinese painters. चाइना के या चीन के जो पेंटर्स हैं उनके बारे में जानते हैं. And their works, और उनके वर्क्स ऑफ आर्ट, उनके कला के कार्यों के बारे में जानते हैं. एज वेल एज द स्टोरी बिहाइंड देम, और उन कला के कार्यों के पीछे कौन सी कहानी है. वी आल्सो नो ऑल अबाउट इट. सिमिलरली द सेकेंड पार्ट, इसमें 2 पेंटर्स की कहानी बताई जाती है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइनीज पेंटिंग, the stories of 2 painters are told. The second part of the lesson, जो सेकेंड पार्ट है लेसन का, एक्सप्लोर्स माने सर्चेस, खोजता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट, आर्ट ब्रूट के कॉन्सेप्ट को वो खोजता है. मीनिंग ऑफ, I will tell you what is art brut. Meaning the art of once, that is the art brut meaning. Once means pupil, meaning the art of once means people who have no right, but they are completely
painting a very realistic paintings, but they do not have formal training. बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको औपचारिक ट्रेनिंग नहीं मिली, प्रशिक्षण नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे कलाकार हैं. As I am also. I have knowledge, a bit of knowledge to play tabla. For my recreation, sometimes in my home I play it. But I have never been given formal training of playing tabla. But I play it to take my own interest. And that is fit. When someone sings along with my tabla, that is fit. So this is art brute. Means the art that comes without academic or formal training. ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाने वाले जो मिस्त्री हैं, मैंसन हैं, वो कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं लेते, बट दे बिकम वेरी ग्रेट एक्सपर्ट. वो बहुत महान एक्सपर्ट बन जाते हैं. Although they do not have right for involving such type of the arts because they do not have formal training, but they involve themselves for such types of the art. Thus we learn a great deal about art and its history in this lesson. इस पाठ में हम लोग महान हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, कला के इतिहास के बारे में और बहुत अधिक कुछ जानेंगे. And that will be taught in the next video. Okay? That will be uploaded in the next class. Thank you very much. God bless you a lot.